Hello children, welcome back to my talks, standard 12th biology. Okay, so today I'm going to talk about types of RNA and process of transcription. Now you must be very much aware, okay, about RNAs. RNAs in the last class we talked about three types of RNA. I told you what are the three types of RNA: the mRNA, messenger RNA, ribosomal RNA, that is rRNA, and tRNA, that is transfer RNA. The function, again in I had told you then, I am telling you again. Okay, the transcription, the formation of mRNA from DNA in the nucleus takes place. Okay, that one strand, like in last class I told you that one strand of mRNA is transcripted from one strand of DNA. Okay, and it codes for protein synthesis, and after that is transcripted, it is squeezed out from the nucleus into the cytoplasm. Okay, where the tRNA, that is transfer RNA, okay, it reads the transcript, okay, the message on it, the translation takes place, okay, and then it looks also for amino acid, and ribosomal RNA helps in catalyzing the complete process. Okay, so these are the three types of RNAs, and transcription we are talking about again in detail, how actually the formation of mRNA takes place from DNA, how it is transcripted, how it is coded, how it carries the message, okay, of the protein synthesis. That we are going to do in this particular topic. Okay, and so please pay attention. Types of RNA I have already told you, and process of transcription. Now children, over here there are two topics. Okay, one is transcription in prokaryotes, that is bacteria we have talked about, and the other is transcription in eukaryotes, that is in our body. Okay, transcription in prokaryotes, in bacteria, what happens, that transcription and translation start taking place at the same place. Why? Because they do not have a true nucleus, isn't it? Everything has to take place in the cytoplasm. तो अभी तक ट्रांसक्रिप्शन पूरा भी नहीं होता है, ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है, बट दैट टेक्स प्लेस ओनली इन प्रोकैरियोट्स. व्हाइल इन यूकैरियोट्स, इन आवर बॉडीज, फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन हैज टू टेक प्लेस, एमआरएनए हैज टू फॉर्म, और उसके बाद, और यहाँ जैसे अभी एमआरएनए फॉर्मेशन थोड़ा भी बना है, ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाता है. ओके, किसमें होता है? बैक्टीरियाज में होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है, और यूकैरियोट्स में फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन हैज टू टेक प्लेस एंड देन ट्रांसलेशन. सो दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड DNA, okay, the DNA helix, and 3 end, 5 end, okay, as it is said, this is the 5th end, okay, you can see the 5th end and the 3rd end. So this is what, so there are two, this is the initiation process, the elongation process, and the termination process. And you know that DNA dependent RNA polymerase is the enzyme which participates in transcription, which plays a very, very important role in transcription. So here what happens, apart in the last class I told you that for protein synthesis or for mRNA transcription, the complete DNA का transcription की जरूरत नहीं है. जो प्रोटीन फॉर्म करना है, जितनी कोडिंग उसकी जरूरत है, बस उतना ही ट्रांसक्रिप्ट होगा. That much of DNA only form has to be transcripted into mRNA. तो suppose this much part of that DNA has to be transcripted, तो ये शुरू होता है. And here what happens, that RNA polymerase which I told you, that has to start. So it gets attached, okay, with the sigma factor, that is initiator, okay, the initiator or promoter you can say. So it has to start from here. So sigma has to get attached to RNA polymerase, and it goes on reading, because the reading has to take place. How the mRNA has to form, तो DNA को वो read करेगा. It has to read this, and finally the tail, जैसे जैसे वो read करता जाएगा, that mRNA starts falling. So this is the initiation factor. This is how it has to start. So remember it, the DNA helix, the polymerase, the outer big, this big one is polymerase, RNA polymerase, inside is the sigma factor. In the second one, this is the chain elongation. Now this children, this what you see, okay, ये जो आप देख रहे हो, ये वाला, okay, this is what is the RNA which is formed. तो यहाँ भी ये सिग्मा फैक्टर, ये आपका सिग्मा फैक्टर है, ये आपका RNA पॉलीमरेज है, सिग्मा फैक्टर है. तो ये देख रहे हो कैसे रीड कर रहा है, बीच से जाके रीड कर रहा है कि एक्चुअली व्हाट, एंड दिस इज द टेल विच इज फॉर्म्ड. ये जो टेल है, दैट इज नोन एज RNA. सो mRNA है वो, mRNA इज बीइंग फॉर्म्ड. हाउ द ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस, ओके, यहाँ से एक अटैच होगा फ्रॉम हियर, ये अटैच होगा, ये जो अटैचमेंट है मैं रेड से ही दिखा रही हूँ, और एक बार, because that is working properly. Okay, so you can see this tail, ये जो tail जो formation है, this tail is
mRNA ट्रांसक्रिप्शन, और ये पूरा रीड करेगा जहां तक, यहां तक अगर उसको रीड करना है तो वहां तक रीड करेगा. द नेक्स्ट वन इज टर्मिनेशन. सो इट हैज कंप्लीटली रेड एंड इट हैज रीच टू द लास्ट एंड. एंड यहां तक पहुंचने के बाद क्या होगा, mRNA gets separated from this polymerase enzyme. Okay, so they fall off, they get separated. RHO factor, okay, this the sigma factor, RHO factor that gets at terminator region, वो separate हो जाता है, and mRNA transcription has. So this is the mRNA which is formed. So this is the transcripted mRNA. This is how the mRNA is formed in bacteria in prokaryotes. Got it? And when we talk about this, okay, in eukaryotes, यहाँ पे थोड़ा सा कैपिंग और स्प्लाइसिंग की जरूरत होती है, बिकॉज यहाँ बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, बट हियर इट कंटेन्स, मीन्स दिस पर्टिकुलर ये जो फॉर्मेशन है यहाँ भी वही है. यू कैन सी दिस डीएनए, ओके, द डीएनए हेलिक्स, द सेम थिंग यू कैन सी द सिग्मा फैक्टर और वो जो आरएनए पॉलीमरेज, वो सारे हैं, ओके. बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आरएनए है इट कंटेन्स एक्सॉन्स एज वेल एज इंट्रॉन्स. तो इंट्रॉन्स हमको जरूरत नहीं है, ओके. सो इंट्रॉन्स हैज टू बी स्प्लाइस्ड ऑफ. तो बिफोर इट इज स्क्वीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, इसमें और कंडीशनिंग होती है, और उसमें क्या होता है कि इंट्रॉन्स को सेपरेट किया जाता है और केवल एक्सॉन्स को जोड़ा जाता है, ओके, विद द एंजाइम, एंड फाइनली दैट इज व्हाट फॉर्म्स mRNA. बिकॉज जो ट्रांसक्रिप्ट, जो एग्जैक्ट mRNA होगा वो एग्जैक्ट प्रोटीन के लिए कोड करेगा. उसमें और कुछ भी आलतू फालतू कोड्स होंगे तो वो प्रोटीन कोडिंग नहीं होगी. तो इंट्रॉन्स डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग. सो इंट्रॉन्स, जैसे ये पूरा का पूरा, दिस होल थिंग इज योर आरएनए. तो आरएनए के बीच में ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है, तो इसको काटना होगा, ओके. द सीजरिंग, द स्प्लाइसिंग हैज टू टेक प्लेस, ओके, एंड देन इट हैज टू बी. लेट मी चेक द book what it says. Okay, so this part we had done. Yeah, the coding strand and all that. So initiation factor, the promoter, okay, terminator factor in bacteria, yes, the translation, and translation and transcription takes place in the same place, at the same place in bacteria in prokaryotes, okay. And here, yes, यहाँ पे है यूकैरियोट्स में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज है, जिसमें 3 types of RNA polymerases हैं, okay. 3 types of RNA polymerases are found in the nucleus, in addition to the RNA polymerase which is found in the organelles. Organelles में RNA polymerase है, उसके अलावा भी और 3 RNA polymerases हैं. क्या है? RNA polymerase 1 transcribes, helps in the formation of ribosomal RNA. rRNA should remember, okay. और ये जो S है, S is the sedimentation unit, okay. 2S, 28S, 5S, 12S जो sedimentation unit है, okay. और RNA polymerase 3 is responsible for transcription of tRNA. Now tRNA का भी small nuclear RNAs and all उसके sizes दिया हुआ है, but come to know that RNA polymerase 3 responsible for transcription of tRNA, and polymerase 2 transcribes for precursor of mRNA, okay. That is heterogeneous mRNA, okay. So RNA heterogeneous, वो RNA polymerase 2. तो polymerase 1 क्या? Ribosomal RNA. Polymerase 3 that is transfer RNA, and polymerase 2 is mRNA. और सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? दैट इट ट्रांसक्रिप्ट्स फॉर बोथ द एक्सॉन्स एंड द इंट्रॉन्स. तो दोनों हो जाएंगे और फिर वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, क्योंकि इंट्रॉन्स अगर रहेगा तो वो फंक्शन नहीं करेगा. जैसे मैंने आपको पहले बोला कि इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड ही नहीं करेगा अगर इंट्रॉन्स रहेगा तो, ओके. तो स्प्लाइसिंग से क्या करेंगे? इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, स्प्लाइसिंग, सीजरिंग जो बोलते हैं ना, वैसा. And then it is joined into a definite order. तो उसको कैपिंग और टेलिंग बोलते हैं. कैपिंग में क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड दैट इज ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसको 5th एंड में, मतलब ये वाले एंड में ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करेंगे, ओके, हेटेरोजेनस आरएनए में. और टेलिंग में क्या करेंगे? थर्ड एंड में एडिनाइलेट रेसिड्यूज को ऐड करेंगे, ओके. तो वो दोनों को करते हैं टेलिंग और कैपिंग में, दैट यू शुड रिमेंबर, ओके. और
उसके बाद वो फुली प्रोसेस्ड हो जाएगा। प्रोसेस्ड हो जाएगा मतलब इंट्रॉन्स कट होके केवल एक्सॉन्स। मैच्योर, जब वो मैच्योर होता है एमआरएनए, तो उसके बाद उसमें इंट्रॉन्स नहीं होते, मतलब जब वो स्क्वीज होने के लिए तैयार हो जाता है। दैट इज व्हाट इट इज, एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। तो समझ में आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होगा, ट्रांसलेशन बाहर होगा यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों अंदर ही होगा। ठीक है, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटीज, ओके, and this is what is the RNA world, the understanding of the RNA, okay, and the RNA dependent processes in the living systems. So again, a very important topic you can say, and these topics must be covered. Children, I don't find you find it appreciative or not, okay. Now sometimes I feel that I should be doing all the complete chapter altogether, okay. When it's not useful, like topic wise doing for you, you do not appreciate, you do not put any comments, whatever it is, let it go. So then what's the use? Let me put all together into one chapter and do it. Okay, so do put some comments over there, like it, share it, subscribe it. Don't stay like that. It is something it should be like you understand very well कि चीजों को जब तक आप अप्रिशिएट नहीं करते, सामने वाले को वो विगर, वो एनर्जी नहीं मिलती और अच्छा काम करने का, तो अगर फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो कभी भी कुछ नहीं, isn't it? This is for your good. Got it? So do share it, subscribe it, and like it at least when you see it. Thank you very much.